everyone, here welcome in our SST class. I am Malvi Bharadwaj and your SST teacher. Today we will continue our economics chapter number 2. इसमें हम पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्सेज। इसमें हमें पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट। Sakkal's mother Sheila looked after the domestic work, मतलब वो अपने घर के डोमेस्टिक वर्क तो देखती ही है, एंड हेल्प हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की भी हेल्प करती है, एंड द ब्रदर जीतू सिस्टर एंड द स्पेंड देयर टाइम एंड जीतू एंड शी टू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब घर में हर प्रकार से हेल्प तो करते ही हैं। And domestic G2 and the C2 are the small and continue to work the forced population. Either the G2 and C2 Sheila can be counted the unemployment, मतलब उन्हें unemployment में काउंट नहीं कर सकते। And the people from the 15 years to 59 years suppose brother and sister don't fall within the age group, इस एज ग्रुप में नहीं आते, डोंट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉय, इसे हम अनएम्प्लॉय नहीं कह सकते। जैसे मदर शीला वर्क फॉर अ फैमिली, इसकी जो मदर है शीला वो फैमिली के लिए काम करती है, एंड शी इज़ नॉट अ विलिंग टू वर्क द आउटसाइड, मतलब वो बाहर काम के इसमें नहीं है, एंड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर द पेमेंट एंड शीज टू कैन नॉट बी कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जा सकता। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स along not to the mention in the story and cannot be called the unemployed, ऐसे unemployed नहीं कहा जा सकता। In case of the India we have the unemployment in the rural and the अर्बन एरिया, मतलब से रूरल और अर्बन एरिया में काउंटेड नहीं किया जा सकता है। हाउएवर द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन द रूरल एंड द अर्बन एरिया, और इसका जो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का वो रूरल और अर्बन एरिया से डिफरेंट है। इन केस ऑफ द रूरल एरिया, और यदि रूरल एरिया में हम केस करें, देयर इज अ सीजनल एंड द डिस्कस टू द अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरिया हैव द मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन एरिया है वहाँ पर अधिकतर लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में आते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स when the people are not able to find the job during the some month of the year. The people depend upon the agriculture and usually faces the both kind of the problem, and there are the certain busy season when the showing the harvesting, wedding in the threshing is done, and the certain month don't provide the much work to the people and dependent on the agriculture. In the case of the discuss to the unemployment, people appear to be the employed and they have agriculture plot where they find the work, and the usually happen among the family members engaged to the agriculture activity, and this work required for the services of the 5 people but engage the 8 people, and their people are the extra, and these 3 people have the work to the same plot as the others, and the contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If there is people are removed to the productivity of the field or not to the decline in the field, require that the services of the 5 people and the 3 extra people of the discuss to the employment. In case of the urban area and educated, the unemployment have become the common, मतलब ऐसे एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉमन हो जाता है। Phenomena, many youth were the matriculation, graduation and post graduate degree are not to able to find the job, मतलब इसमें कई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट हो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट से, परंतु फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है। स्टडी शोज दैट ये स्टडी शो कर देती है द एम्प्लॉयमेंट of the graduate and the postgraduate has increased the faster than the among matriculation and the production, the main power situation, and with witness as a surplus the main power in the certain category, the contest with the shortage of the main power in the other. There is the unemployment among the technical quality person on one hand, and while the 3 is the death of the technical skill requirement by the economical growth, and unemployment lead to the wages of the main power resources, and people who are in the assess their economical turn into the viability, and there is a feeling of the hopeless and despair among the youth, and the people don't have
इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, मतलब लोगों के पास इतने सफिशिएंट पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकें। इनिशियली द एजुकेशन पीपल आर द विलिंग टू द वर्क, मतलब एजुकेटेड जो लोग हैं उनकी इच्छा यही होती है कि वो वर्क करें। एंड एम्प्लॉय टू द ग्रेट सोशल वेस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड टू द इंक्रीज द इकोनॉमिकल overload and the dependent on the employment on the working population, and the quality of the life of the individual as well as the society is adversely affected when a family has to be live on the bare structure. It is a general decline to the health status and rising withdrawal from the school system, hence the unemployment of determined impact on the overall the growth of the economy. Increases unemployment is indicated to the praise the economy. It is also based the resources which could be have to be in full time employment if the person cannot be used to their resources, and naturally appears to be the ability of the economy and cases the India the satisfactory and the unemployment in the case of the law. In the large income productivity are come to the employment that appears to be worked through the years and term and their potential to become the not adequate for the work they are pursued. It's going to be forced upon them and they may be the therefore wanted to work their choice, मतलब अपने चॉइस के हिसाब का वर्क जो है करना चाहते हैं, परंतु कई बार जो है चॉइस का वर्क नहीं कर पाते हैं। And engage to their activity and its responsibility to the earning the potential and the earning form of their substance labor. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.